Welcome, student. Today we will study the friction concepts, basic fundamentals of friction. As you are aware that friction is the force which opposes the motion. Okay, so let's start with it. तो बेसिक concepts of friction सबसे पहले हम पढ़ेंगे. Okay, सबसे पहले हम पढ़ेंगे variation of friction with applied force. With applied force. अब एक ब्लॉक को कंसीडर करिए. कंसीडर अ ब्लॉक which is kept on a horizontal plane. No force is applied on the block. No force is applied on the block. What is the value of एक क्वेश्चन कर रहे हैं. What is the value of force of friction? Force of friction acting on the block. Answer. So this clearly tells us one thing. The friction is developed only when some force is applied to this mass. If we do not apply any force to this block, then force of friction will also be zero. Now what happens? Now we gradually increase the force acting on the block. इसको समझिएगा. Suppose करिए we have applied a force of 2 Newton. We come to know that block does not move. It does not move. Why? Because the force of friction acting on the block is more than 2 Newton. So if we do not apply any force, then force of friction is zero. But when we apply the force and we observe that on applying a force on this block, it is not moving. तो इसका मीनिंग क्या है? डेफिनेटली जैसे ही हम फोर्स को अप्लाई करते हैं, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डेवलप हो जाता है. जैसे ही हम एक्सटर्नल फोर्स को किसी बॉडी पर अप्लाई करते हैं तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डेवलप हो जाता है. फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डेवलप हो जाता है. फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डेवलप हो जाता है और वो बॉडी के मोशन को अपोज करता है. अगर हम बॉडी पर कोई भी फोर्स, इफ वी डू नॉट अप्लाई एनी फोर्स on the body, then force of friction does not act on the body. पर बॉडी पे जब भी हम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं, then force of friction is developed which opposes the motion of body. So in this example, if applying a force 2 Newton, the body does not move, that clearly suggests us that force of friction is more than 2 Newton. Now let's see what happens if we gradually increase the force on the body. मान लीजिए अब हम बॉडी पर धीरे धीरे इस बॉडी पर हम फोर्स को क्या करेंगे, अब इंक्रीज करेंगे और हम देखेंगे कि on applying what amount of force body starts moving on the
horizontal floor. ये देखेंगे हम. So this is a just a basic part of understanding. So I think you are done with it. So I am moving to the next slide. अब आपने बॉडी पे फोर्स लगाया, मान लीजिए 2.2 न्यूटन. बॉडी डज नॉट मूव. बॉडी डज नॉट मूव. That means friction. Suppose friction is 2.3 न्यूटन. फ्रिक्शन इज 2.3 न्यूटन. अब हमने बॉडी पे फोर्स को इंक्रीज किया. Now we are applying 2.5 Newton force to move this body on the horizontal surface. Then we come to know that friction is also increasing with the increase in applied force. Body does not move. Now gradually we are increasing the force on the body. Our object is very clear. We want to move this body on this surface. So it is 2.8 Newton. Friction 2.9 Newton. Body does not move. Body does not move. This is the example which we are taking. Now suppose we apply a force 3 Newton. तो ये प्रैक्टिकल बेस्ड एक्सपीरियंस है. जैसे जैसे हम अप्लाइड फोर्स को इंक्रीज करते जाएंगे, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी अपनी वैल्यू को इंक्रीज करता जाएगा. अब यहाँ पर हो गया फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. एक एग्जांपल लिया हमने 3 न्यूटन. तो वी कैन से बॉडी इज अबाउट टू मूव. About to move. Frictional force reaches its maximum value. मैक्सिमम वैल्यू को हम बोलते हैं लिमिटिंग वैल्यू. The limiting value of friction is given by mu n. Mu coefficient of friction, and you know that n is the normal reaction. इसको आप नोट कर लीजिए. तो बिल्कुल क्लियर हो गया. Even no force is applied on a body which is at rest, force of friction is zero. But when we apply external force, the force of friction develops. As we gradually increase the applied force, the force of friction also increases gradually. And
reaches its maximum value, that is called the limiting value. तो ये बड़ा एक छोटा सा हमने एग्जांपल यहाँ क्रिएट किया. आई थिंक यू आर डन विद इट. आई एम मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड. पहले हमें इसको समझना पड़ेगा. अब देखिए एक कंक्लूजन पे हम पहुंच गए. टू मूव अ बॉडी on a surface, we should apply a force on the body, which should be greater than equal to limiting force of friction. So applied force is greater than equal to mu n. When applied force is equal to mu n, we say that body is about to move. When applied force is greater than mu n, body will move. Body will move. So that is the first basic concept about the friction. So are you done with it? You can chat with me. Okay. And you know that N is the normal reaction. If you want to calculate the static max limiting force of friction, then you must know N. And mu is the coefficient of friction between two surfaces. Mu is different for different surface. Different for different surfaces. Different for different surfaces. Okay. अब हम एक ग्राफ प्लॉट करेंगे. Wait a minute. On x-axis, we will take applied force, F. Here we will take
force of friction on y-axis. Kinetic friction means when body starts moving. Static friction, and this is the maximum value of static friction, that is mu n. तो आप देखिए, let me explain you the graph. When no force is applied, when no force is applied on the body, force of friction is zero. As you increase the applied force, the force of friction also starts increasing, changes linearly with applied force. And after some time, when applied force reaches the value of limiting value, maximum value, when applied force is equal to force of limiting force of friction, तो यहां पर आप देखिए, हम कह सकते हैं कि अप्लाइड फोर्स लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के इक्वल हो गया, एंड तो दिस इज एफ इज लेस देन म्यू एन, एफ इक्वल टू म्यू एन, एंड so friction is a self-adjusting force. We can say that friction is a self-adjusting force. It adjusts with the applied force. When applied force becomes more than limiting force, limiting force of friction, limiting force of friction, the body begins to, the body begins to, the body begins to move. At this stage, wait a minute, let me draw it. At this stage, the frictional force suddenly decreases by a small amount, by a small amount. ये देखिए, here in this particular graph, the applied force is greater than mu n. Decreases by a small amount and acquires, लिखना जरूरी है. First of all, you should understand, and acquires a constant value. So this is the friction when body moves.
इसलिए हमेशा कहते हैं कि काइनेटिक फ्रिक्शन मीन्स व्हेन बॉडी मूव्स, काइनेटिक फ्रिक्शन इज ऑलवेज लेस देन द स्टैटिक फ्रिक्शन. So draw this graph. तो ये बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए. इसको आप जल्दी से नोट कर ले. तो देखिए अप्लाइड फोर्स जीरो था, फ्रिक्शनल फोर्स भी जीरो था. जैसे जैसे अप्लाइड फोर्स इंक्रीज करते जाएंगे, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा. और यहाँ पे हमें थोड़ा इसको ऐसे लिखना है, म्यू एन नहीं लिखना क्योंकि म्यू एन तो कांस्टेंट वैल्यू है. अप्लाइड फ्रिक्शन, दिस इज बेटर. तो आप देखिए यहाँ पर जब अप्लाइड फोर्स जीरो होता है तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी जीरो होता है. तो जब तक किसी बॉडी पर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं करेगा. नाउ टेक द एग्जांपल लाइक दिस, टू बॉडीज, टू सरफेसेस आर इन कांटेक्ट and no external force acts, so the force of friction is zero. When we gradually increase the external force, we find F is the applied force. जैसे जैसे हम इस फोर्स को इंक्रीज करते जा रहे हैं, वैसे वैसे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इंक्रीज होता जाता है, एंड फाइनली इट रीचेज इट्स मैक्सिमम वैल्यू, that is called limiting value, that is given by mu n. And when we apply the force more than mu n on the body starts moving on the other surface. तो जैसे ही बॉडी मूव होना स्टार्ट होती है तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन थोड़ा सा it reduces by a very small amount. And so from here we can say that kinetic friction is less than kinetic friction is less than static friction. Are you done with it? So we have to move on the next. So first of all, we need to understand the theory. Without theory and lot practice is needed. अब तक आप लोगों ने इतने टेस्ट दिए हैं. Now you understand. पहली जरूरी चीज है कि हमारे पास मटेरियल होना चाहिए, और दूसरी चीज है हमें कंटिन्यूअस प्रैक्टिस करनी है. तो आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स. ये आपको क्लियर हो गया. अब हम पढ़ेंगे लॉज ऑफ फ्रिक्शन. लॉज ऑफ फ्रिक्शन मालूम होने चाहिए. पहला, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन is tangential parallel to the two surfaces two surfaces in contact, and always acts in always acts in a direction opposite to the
direction of motion. Direction of motion. अब जैसे देखिए, suppose this body is moving towards right, then force of friction should act here. Tangential. अगर हम इसमें पूछें कि इस केस में नेट फोर्स क्या है बॉडी पर, नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी, तो निकाल सकते हैं F माइनस फ्रिक्शन, फिर आप उसको मास इनटू एक्सलरेशन से भी इक्वेट कर सकते हैं. तो टेंजेंशियल लगेगा. It will always act tangential. Just see this. Where two surfaces are in contact, the force of friction acts tangential and it acts in a direction opposite the direction of motion. That is first law. तो ये हो गया आपका फर्स्ट लॉ. अब हम आगे चलते हैं सेकंड लॉ पर. हमेशा याद रखिए टेंजेंशियल लगेगा. इस बात को हमेशा ध्यान रखना चाहिए. It always acts tangential and opposite to the direction of motion. So we have taken an example. Let F force is acting on the body. Body is moving under the applied force F, which is definitely more than static friction. So how to find the net force acting on the body? Applied force minus friction, or net force can be written as mass into acceleration. Now we are moving to the second law. Second law of friction. The force of limiting friction. You must know all these laws. The force of limiting friction. The force of limiting friction depends upon the nature depends upon the nature of two surfaces in contact in contact and their state of roughness and their state of roughness. Third law. The maximum or limiting force of friction force of friction force of friction is directly proportional is directly proportional to the normal reaction between two surfaces
So here we get it, F limiting equal to mu n. So mu is called coefficient of friction. Coefficient of friction. Coefficient of friction. That is the third law. Fourth law. The force of limiting friction. The force of limiting friction. The force of limiting friction is independent independent of the extent of the area. एरिया पे डिपेंड नहीं करता है. Of the area of the surfaces. In simple word, of the surfaces in contact. In contact. So long, समझिएगा इसको, so long as the normal reaction remains unchanged. तो देखिए दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट है इन पूरे लॉस में. पहली चीज है नेचर ऑफ सरफेस पे लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डिपेंड करता है. तो नेचर ऑफ जो म्यू है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, दैट इज डिसाइडेड बाय द रफनेस ऑफ टू सरफेसेस इन कांटेक्ट. वो कितने रफ हैं उससे हम म्यू को डिसाइड करते हैं. और लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन विच इज गिवन बाय म्यू एन, डेफिनेटली ये डिपेंड करता है नॉर्मल रिएक्शन पे. इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द एरिया. और यहाँ हमने आगे लिख भी दिया एज लॉन्ग एज द नॉर्मल रिएक्शन रिमेन्स अनचेंज्ड. तो ये तभी बदलेगा जब नॉर्मल रिएक्शन चेंज होगी. जब ये नॉर्मल रिएक्शन चेंज होगी. सो राइट डाउन. विदाउट लॉक हम आगे प्रोसीड नहीं कर पाएंगे अच्छे से. अब जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूँ. बड़ा अच्छा एग्जांपल है. अब जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल हम करते हैं. सपोज करिए ये ब्लॉक है 10 kg. इट इज मूविंग ऑन ए सरफेस और यहाँ म्यू दिया हुआ है. मान लीजिए स्टैटिक फ्रिक्शन म्यू एस इज गिवन एज 0.2. सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन निकालेंगे. लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन वो होगा म्यू एस इंटू एन. म्यू एस क्या है, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन व्हेन बॉडी इज इन रेस्ट. कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन. अब हम जानते हैं वेट एक्स डाउनवर्ड 10 जी और ये नॉर्मल रिएक्शन होगी. तो नॉर्मल रिएक्शन क्या होगी, 10 जी होगी. लेट जी टेक जी एस 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. एप्लीकेशन सीखिए. तो नॉर्मल रिएक्शन होगी 10 इंटू 10 100. लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हो गया. लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हो गया. लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हो गया बच्चों म्यू एन म्यू एस इंटू एन. और ये दिया हुआ है 0.2. 0.2 इंटू 100 20 न्यूटन. सो
it is clear that to move the block on the surface, applied force should be greater than 20 न्यूटन। तो आप इस बॉडी पर कोई भी ऐसा फोर्स लगाएंगे जो 20 न्यूटन से कम है, 20 न्यूटन से कम है, तो क्या ये बॉडी सरफेस से मूव करेगी? सबसे पहले तो ये बेसिक चीजें सीखनी है हमें। नहीं करेगी। ये बिल्कुल क्लियर है। दैट शुड बी क्रिस्टल क्लियर। Because an example teaches you how to apply the theory on question. तो ये लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डिसाइड करेगा मोशन ऑफ बॉडी ऑन द सरफेस, और डेफिनेटली म्यू बहुत इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पे प्ले कर रहा है। अब जैसे देखिए, अब हम अगले स्लाइड पे जाते हैं और एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन करते हैं। सपोज कर लेते हैं, सपोज द अप्लाइड force on the body is equal to say 40 Newton. Definitely body will move. So this is 40 Newton. Force of friction acts opposite. Net force, motion, direction of motion. वो फ्रिक्शन आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। मास 10 है और ये फ्रिक्शन कैसा है? काइनेटिक फ्रिक्शन है। और काइनेटिक फ्रिक्शन कैसे दिया जाएगा? म्यू के into n, where mu k is the coefficient of kinetic friction, coefficient of kinetic friction। तो जब बॉडी रेस्ट में होती है तब हम म्यू एस यूज करते हैं, coefficient of kinetic friction। there is no concern of area, एरिया का कोई भी कंसर्न नहीं है। एरिया इंपॉर्टेंट नहीं है, एरिया इंपॉर्टेंट नहीं है, एरिया इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट है applied force should be greater than limiting force of friction। तब body state of rest को छोड़ेगी, then only body will leave the state of rest and move ahead, move forward। अब देखिए कुछ एक और बेसिक डेफिनेशन है फ्रिक्शन में। सबसे पहले तो हमें इन डेफिनेशंस को करना है। तो आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। बहुत सिंपल था, नेट फोर्स निकाल लिया। दो फोर्स हैं एक दूसरे को अपोजिट, दे एक्ट अपोजिट टू ईच अदर, तो नेट फोर्स कैसे निकाला जाएगा? डायरेक्शन ऑफ मोशन का जो फोर्स है वो पॉजिटिव माना जाएगा, एंड a force which acts opposite to the direction of motion is considered as negative। ये देखिए माइनस साइन है यहाँ पर। तो देखिए अब हम अगली डेफिनेशन कर रहे हैं। एंगल ऑफ फ्रिक्शन, एंगल ऑफ फ्रिक्शन
तो लिखेंगे इसमें द एंगल which the resultant of the force of limiting friction चलिए इसको डिनोट कर देते हैं SM static maximum and the normal reaction and फोर्स वेक्टर है इसलिए हमने इसे एरो लगा दिया mix with the normal reaction and तो चलिए अब इसको समझते हैं देखिए कंसीडर अ बॉडी एक बॉडी को आप कंसीडर करिए which is kept on a horizontal floor. Okay, this is the body. Weight, normal reaction, limiting force of friction, FSM. अब हमें क्या करना है FSM और नॉर्मल रिएक्शन का रिजल्टेंट निकालना है. So for that students we need to draw a parallelogram. तो हमने पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लिया और हम जानते हैं डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम गिव्स द resultant force resultant of FSM and N. अब ये रिजल्टेंट कितना एंगल बनाता है नॉर्मल रिएक्शन से ये एंगल बहुत इंपॉर्टेंट है थीटा तो थीटा इज कॉल्ड एंगल ऑफ फ्रिक्शन तो फिर से समझिए नॉर्मल रिएक्शन और एफएसएम देख लीजिए लिमिटिंग फ्रिक्शन फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे एफएसएम और नॉर्मल का रिजल्टेंट निकालेंगे रिजल्टेंट निकालने के लिए हमें पैरेललोग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा एंड वी नो इट वेरी वेल द डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम गिव्स द रिजल्टेंट तो ये रिजल्टेंट आ गया अब ये रिजल्टेंट फोर्स एफएसएम और एन का रिजल्टेंट फोर्स जितना भी एंगल बनाएगा नॉर्मल रिएक्शन के साथ दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ फ्रिक्शन अब देखिए पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी ये साइड क्या है एफएसएम तो ये भी क्या होगी एफएसएम तो tan थीटा हम निकाल लेंगे FSM डिवाइडेड बाय n तो म्यू n डिवाइडेड बाय n so tan theta is mu theta is angle of friction so tangent of angle of friction is always equal to mu इसको समझना जरूरी है and please revise 2 times 3 times once a student complains कि मुझे समझ में नहीं आया तो सिंपल है 2 बार पढ़ो फिर स्टूडेंट बोलता है मेरे को फिर पूरा समझ में नहीं आया तो सिंपल है 3 बार पढ़ो फिर स्टूडेंट बोलता है मुझे 3 बार में नहीं समझ में आया 4 बार पढ़ो करना तो है तो उसका नंबर ऑफ रिविजन्स को 2 बार 3 बार करो तो प्रॉब्लम रिजॉल्व होगी सॉल्व होगी नहीं करोगे तो नहीं होगी तो दैट इज द कंसेप्ट ऑफ द एंगल ऑफ फ्रिक्शन so tan theta is
tan थीटा इज म्यू, ये तो अब हमारे को पता चल गया। tan थीटा, थीटा इज एंगल ऑफ फ्रिक्शन, उसका tan ले लेंगे तो म्यू मिलेगा। हमने प्रूव कर दिया इसको। आप वेक्टर को क्लियर करिए सबसे पहले। अगर आपका वेक्टर वीक होगा तो फिर फिजिक्स में तो भाई बहुत प्रॉब्लम होगी। हाँ, 11th क्लास का टेक्स्ट को ज्यादा से ज्यादा पढ़िए। अब देखिए हम आगे बढ़ रहे हैं और एक इसमें बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट करने जा रहे हैं, दैट इज एंगल ऑफ रिपोज। एंगल ऑफ रिपोज और एंगल ऑफ स्लाइडिंग। अब आप देखिए, आई शो यू वन एग्जांपल। जस्ट सी दैट, ये जो माउस है ये मैंने इस बुक पे रखा हुआ है। अब क्या है, द बुक इज विच पोजिशन हॉरिजॉन्टल। अब मैं धीरे धीरे इसको हॉरिजॉन्टल प्लेन को इंक्लाइन प्लेन में कन्वर्ट करता हूँ। तो आप देखिए फिर से, लेट्स डू इट अगेन। ओके, लेट्स टेक दिस। ओके, आप देखेंगे एक सर्टेन एंगल पे जो बॉडी रखी हुई है वो नीचे की तरफ जाना शुरू हो जाती है। तो डेफिनेशन तो हमें वही देनी पड़ेगी जो स्टैंडर्ड टेक्स्ट होता है। देखिए, द एंगल ऑफ रिपोज और एंगल ऑफ स्लाइडिंग, एंगल ऑफ स्लाइडिंग is the angle, is the angle which an inclined plane, inclined plane makes with the horizontal। इंक्लाइन प्लेन जितना भी हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल बनाता है हम उसकी बात कर रहे हैं। When a body placed over it, when a body placed over it just starts sliding down, तो अब देखिए इसको समझेंगे। ये इंक्लाइन प्लेन है और ये कितना एंगल बनाता है हॉरिजॉन्टल के साथ, थीटा। अब इस पे एक बॉडी रखी है और ये बॉडी नीचे की तरफ स्लाइड करती है। तो मैंने पिछली क्लासेस में आपको रिजॉल्व करना बताया था। ये हो गया mg, ये एंगल होता है थीटा। इसके दो कंपोनेंट हो जाएंगे mg cos थीटा, तो नीचे की तरफ लगेगा। तो चलिए इसको थोड़ा अच्छे से करते हैं। mg sin थीटा और पीछे लग रहा है FSM, स्टैटिक मैक्सिमम फ्रिक्शन। अगर देखिए mg sin थीटा FSM से कम होगा, the body will not move, the body will not move। डेफिनेटली बॉडी को नीचे ले जाने वाला फोर्स कौन सा होता है इंक्लाइन प्लेन पर, हमेशा याद रखो। बॉडी को इंक्लाइन प्लेन पर नीचे की तरफ लाने वाला फोर्स होता है mg sin थीटा। याद कर लो, mg sin थीटा, mg sin थीटा। अगर वो फ्रिक्शन से कम होगा तो बॉडी मूव विल नॉट मूव डाउनवर्ड। ये तो पहली बात हो गई। अब दूसरी बात क्या होगी,
जब mg sin थीटा FSM के बराबर होगा तो हम कहेंगे बॉडी इज अबाउट टू मूव। और आप यहाँ पे जानते हैं कि जो नॉर्मल रिएक्शन होती है इंक्लाइन प्लेन में, मैंने आपको बताया था कि इंक्लाइन प्लेन पे नॉर्मल रिएक्शन mg नहीं होती है, mg cos थीटा होती है। पहले आप इसे नोट कर लीजिए, फिर हम आगे की तरफ बढ़ेंगे और बहुत सारे केसेस हैं which we will do. There are great number of questions available with all text. तो you have to chat with me. आपको मुझे बताना पड़ेगा कि आपने इसे नोट कर लिया है, तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। आपको सबसे पहले 11th का टेक्स्ट बुक खूब पढ़ना चाहिए, बार बार। पहले आपका थ्योरी बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। ओके, ठीक है। आप पहले चीजों को समझिए। you need to understand the basic concept. फिर प्रॉब्लम्स में जो एप्लीकेशन यूज होती है उन बेसिक कंसेप्ट में, वो देखिए कहाँ यूज होती है और कैसे यूज हो रही है, फिर उसको प्रोग्राम करिए माइंड में। अच्छा, यहाँ ऐसा होगा तो हमें ऐसा अप्लाई करना है, ऐसा होगा तो ऐसा अप्लाई करना है, और एक एक दो दो बार रिवाइज करिए। डेफिनेटली फिर इसमें इम्प्रूव, पर ये कोशिश आपकी तरफ से होनी चाहिए। इसमें कितने भी लोग आपको पढ़ा दे, कुछ होने वाला नहीं है जब तक आप सेल्फ एस्टीम पे काम नहीं करेंगे। तो हमें तो वही एंगल निकालना था इंक्लाइन प्लेन का, जिसपे बॉडी नीचे स्लाइड करना शुरू कर देती है। ऐसे एंगल को हम रिपोज कहते हैं, या एंगल ऑफ स्लाइडिंग। इंक्लाइन प्लेन का वो एंगल जिसपे इंक्लाइन प्लेन पे रखी हुई बॉडी नीचे की तरफ स्लाइड होना शुरू हो जाती है। तो हमें पता चला mg sin थीटा इज ग्रेट इक्वल टू FSM। और अब देखिए mg sin थीटा इक्वल टू FSM, स्टैटिक मैक्सिमम। और हम ये जानते हैं ये क्या होता है, म्यू एन। तो mg sin थीटा इक्वल टू एन, यहाँ होगा mg cos थीटा, ये देखिए कैंसिल हो गया। तो sin थीटा इक्वल टू म्यू cos थीटा, sin थीटा अपॉन cos थीटा इक्वल टू म्यू tan थीटा इक्वल टू म्यू, या दूसरे वर्ड्स में हम कहें म्यू इक्वल टू tan थीटा। अगर मान लीजिए एक एग्जांपल लेते हैं, ये म्यू √3 है, तो √3 इक्वल टू tan थीटा, और √3 वैल्यू होती है 60 डिग्री की, तो थीटा इक्वल टू 60 डिग्री। तो सीधे क्वेश्चन में आपको फॉर्मूला क्या करना है, सीधे क्वेश्चन में आपको फॉर्मूला क्या करना है, अप्लाई करना है, और बहुत आसानी से हम इन सब चीजों को सॉल्व कर पाएंगे। ये कुछ बेसिक कंसेप्ट्स की बात कर रहे थे हम, तो इस तरह से हम इन सब चीजों को कर सकते हैं, और इसे आप नोट कर लीजिए। And tell me whether you have noted down or not. फिर अगली क्लास में हम लोग अब कुछ छोटे छोटे फंडामेंटल क्वेश्चंस लेना शुरू करेंगे फ्रिक्शन पर, जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। तो फिर मिलते हैं आपसे अगली क्लास में।